Hello everyone, good morning. Good morning, Katta, Krishna, Sankrish, Puneet, Vinita, Tetali, Shri Ram, Darshini, Priya. मैं किसी का नाम थोड़ा गलत बोल दूँ ना तो आई एम सॉरी प्री हैंड. गुड मॉर्निंग एवरीवन. भाई बताओ चलो कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? हाउ फार? व्हाट परसेंटेज ऑफ सिलेबस यू हैव ऑलरेडी कवर्ड? You have exam in the next month. I wouldn't even call it next month. This month only you have exam, है ना? तो कितनी तैयारी हो चुकी है? Is it 90%? Is it 100%? Is it 80%? कितनी हुई है? Yes, good morning everyone. Good morning Shabrish, Vishnu, Ramesh. Good morning Lalit. Good morning Sakshi. I hope my audio video both are clear and you're able to hear me properly. Good morning, Dipanshu. Good morning, Arnab. Good morning, Girijesh. Good morning, Kanika. Hi, Siddharth. Good morning, Ajay. Good morning, Anmol. Stop. What is the stop? पढ़ाई रुक गई है ललित? नहीं होना चाहिए ऐसा, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. I have break. Okay, you can take short breaks, but the break shouldn't go on for more than a day. 100% क्या बात है सिद्धार्थ. शेख आयशा, good morning. Bhupender, syllabus complete. Good to hear that. Definitely the syllabus should be complete by now. Good morning, Janar, Thani, Anmol. Yes, ma'am, clear. Puneet, 90%. Arnab, 70%. Darshini, 90%. Janarthani, 60%. भाई कहीं ना कहीं 60, 70, 80, 90, 100 सारे टाइप के फिगर्स मुझे दिख रहे हैं. ठीक है, जिनके 60s पे अभी हो, मतलब इट्स ऑलमोस्ट हाफ द सिलेबस दैट यू हैव कंप्लीटेड. तो भाई अभी बहुत मेहनत करनी है, बहुत. बिकॉज लॉ क्या है आपका सिर में? फाइनल लॉ इट्स अ ह्यूज सिलेबस. इनफैक्ट 2022 टॉकिंग अबाउट द न्यू सिलेबस, कहीं ना कहीं कंटेंट हैज बीन रिड्यूस्ड स्लाइटली, बट 2016 सिलेबस में तो बहुत ज़्यादा है यार. इतना याद करना, अच्छों की छुट्टी कर दे. Okay, I have break. I complete 100% with past 2 MTP, 2-3 days. Good, fine. 2 रिविजन भी हो चुके हैं भाई. पूजा शिंदे, क्या बात है. ओके कुणाल 100%. चलो, आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर टुडेज राइटिंग प्रैक्टिस सेशन. ठीक है, I am going to keep it a mix of Hindi and English. So anyone who is watching this particular video will understand everything. ऐसा नहीं है कि एक दो वर्ड मैं हिंदी के बोलूंगी, 2-4 वर्ड तो आपको कुछ दिक्कत होगी. You will understand everything. Okay. Ma'am, as your videos are also meant for CMA, this is a CMA session only that I'm taking. So undoubtedly we have videos for CMA, we have videos for CA. They are all different ones. Okay. Now, the session that I am taking today is relevant for CMA final law students. Now, if you talk about the syllabus, ma'am, कौन से syllabus का हम करने वाले हैं? तो I have incorporated such questions which are common for both. So 2016 as well as 2022 syllabus, it is relevant for both of you. Okay, 3 revisions, great. Chalo, I hope you're ready for today's writing practice session. Now, when you look at this particular sheet, you will understand कि ma'am इसमें तो सिर्फ questions हैं. Where are the answers? Well, if I give you the answers, what are we doing over here? Right? I don't want you to read a particular question and know a particular question answer. For that, we have a question bank. Right? ये सेशन का इंटेंशन या मोटिव क्या? इफ यू अंडरस्टैंड द मोटिव ना, देन यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम डिविएटिंग योर माइंड. मैम ये बता दो, मैम ये कर दो, मैम जल्दी करो, मैम धीरे करो. ये सारी चीजें ना अपने तक रखना. ओके, बिकॉज आई नो व्हाट आई एम डूइंग. राइट? So this writing practice session, I'm not going to give you answers. I will make you write answers. So I hope everyone is sitting with a copy and pen for sure. Because if you are here, you must write. That is what we are meant for. Right? क्योंकि हम ये writing practice session कर रहे हैं. Here we are going to learn the art of writing. Here we are going to learn the loopholes. कि हम भाई बच कैसे सकते हैं या कैसे impression छोड़ सकते हैं. Right? कैसे even if we have certain flaws, we are able to score good marks. ठीक है? या कैसे अगर हमारे concepts are absolutely clear but we are unable to present, so how should we approach a particular question? Okay. Fine. So I hope everyone has liked the video. So before we start with the session, I want all my students to please give a beautiful like. Please send the chat notes, ma'am. Right. The notes
or this PDF, which we are going to discuss, has been shared on the Telegram channel. The link has also been shared. The link is also pinned. So you can download this particular notes. But before that, you have to like the video and we are good to commence the session. Right, everyone? Come on, everyone, a thumbs up and we will commence the session. I hope you're all ready with the copy and a paper. I will tell you few tips also, and thereafter, in this file, I have 4 questions which I've incorporated from the entire syllabus. It's not just company law. See, the first question is, of course, company law. The second is company law. The third is Banking Regulation Act. The fourth one is IBC. Right. So today I have taken up 4 questions. Let's see if we can have more such writing practice sessions in future. So we'll incorporate more questions. Okay. Fine. Thank you so much for all your love. Okay. चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन. नाउ I hope you all are aware about the paper pattern. I have also pushed a separate video about the paper pattern, and if you haven't seen the marathon yet, we have uploaded the new syllabus marathon also. In English, it has already been uploaded. In complete English, it will be uploaded in a few days. Right? अब पेपर पैटर्न जिसको पता है उसके लिए ठीक है, जिसको नहीं पता है वो एक बार वो पर्टिकुलर वीडियो रेफर कर लेगा. इन पेपर पैटर्न you know that we have been asked certain MCQs. Now when we talk about MCQs, we also have to write about the justification. So when we did that MCQ series, हमने 5-6 चैप्टर्स के MCQ सीरीज अभी तक कर लिए हैं, उसमें मैंने आपको जस्टिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी बता दिया है. सो यू नो अबाउट द जस्टिफिकेशन, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट ओवर हियर. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस माय डियर, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमारे पास 2 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं. एक होती हैं हमारे पास केस स्टडी और एक होते हैं हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चंस. If I look at the recent MTPs of 2022 syllabus, there are more direct questions incorporated. But if I look at 2016 syllabus, there are more case studies which are involved. But that doesn't give you an sure, I wouldn't say a sure shot guidance कि भाई हमारे में डायरेक्ट ही ज़्यादा आएंगे, हमारे में तो केस स्टडी कम आएगा. यू नेवर नो विद द इंस्टीट्यूट. ठीक है, आपके में आ सकते हैं आराम से केस स्टडीज भी और आपके में आ सकते हैं आराम से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी. हैविंग सेड दैट, देयर इज वन मोर थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू कि जब कभी भी आप अपने क्वेश्चन पेपर्स देखते हो, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते हो, एंड यू लुक एट द सजेस्टेड आंसर एंड यू वंडर, ओ माय गॉड, इज दिस द वे हाउ आई हैव टू प्रेजेंट माय आंसर्स एंड इज दिस हाउ आई विल गेट मार्क्स, अदरवाइज आई एम नॉट एबल टू फेच मार्क्स. नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इंस्टीट्यूट खुद अपनी वेबसाइट पे लिखती है कि सजेस्टेड आंसर्स आर ओनली मेंट फॉर गाइडलाइन. दे हैव नो कनेक्शन विद द एक्चुअल एग्जाम पेपर्स. एग्जाम पेपर्स में एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को समझ के आपको मार्क्स अवॉर्ड करते हैं. इवन पार्शियल आंसर्स आर बीइंग अवॉर्डेड मार्क्स. ओके, सो डोंट थिंक कि जैसा सजेस्टेड आंसर है एग्जैक्टली हम वैसा ही लिखेंगे और हमको मार्क्स मिलेंगे. नहीं, वी कैन वेरी वेल सिंप्लीफाई इट. द ओनली पॉइंट इज कि आपका जो कंसेप्ट है वो एकदम क्लियर कट उसमें दिखना चाहिए. राइट? चल, अब यहाँ पे if you open this particular PDF, I hope you have all got this PDF. मैंने कुछ basic writing tips लिखी हैं which probably अब आप finals में हो तो you must be knowing all this, but we'll have a quick review of this also for the students who need it. Write each question on a fresh page. This is important for a neat presentation. ठीक है. I don't know how many, if you have taken classes from me, you will be definitely knowing this thing. I have told this a lot of times कि examiner जब भी आपके answers को evaluate करता है ना, he or she does not read 100% content. कोई अगर बोलता है ना मैंने तो word by word पढ़ा है, गलत बोलता है. अगर किसी को 500 कॉपीज चेक करनी है वो वर्ड बाय वर्ड कभी नहीं पढ़ता है. और ये हमारी टेंडेंसी होती है. इफ आई एम लुकिंग एट अ पर्टिकुलर शीट, आई रीड द फर्स्ट सेंटेंस, मे बी आई हैवंट रेड एवरी सिंगल वर्ड बट आई हैव रेड द सेंटेंस. दैट्स हाउ एग्जामिनर रीड्स. तो एग्जामिनर आंखों से पढ़ता है और वो ऐसे कंटेंट को पूरा का पूरा ग्रास्प करता है. ही नेवर रीड्स वर्ड बाय वर्ड. तो आपकी ग्रामर अगर ऊपर नीचे है, इट डजेंट मैटर. What matters is
क्लियरली दिखना चाहिए ये क्वेश्चन नंबर 1. यू टर्न द पेज, ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 2 का ए, क्वेश्चन 2 का बी. इफ यू राइट ए बी, ये 3 का बी लिख दिया, यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है एंड दैट इरिटेट्स द एग्जामिनर. सो ईच क्वेश्चन ऑन अ फ्रेश पेज, all parts of the question together. Question number although आप साइड मार्जिन में लिख सकते हो, but it's advisable that you write at the center of the page. ठीक है, बिकॉज वो साइड में कहीं ना कहीं साइड ना हो जाए. सो इट हैज टू बी सेंटर, क्लियरली रिटन. इनकरेक्ट सेक्शन नंबर्स पे वी विल इलैबोरेट. अभी हम थोड़ी और बात करेंगे सेक्शन नंबर्स पे, बिकॉज ये तो एक ऐसा चीज है जो बच्चों को बहुत परेशान करता है, हॉन्ट करता है उससे, राइट. Now, you have to focus on provision and conclusion. This also I'm going to talk about. Points में लिखना है, short paragraphs में लिखना है, to retain examiners attention. अगर मैं आपको ऐसे बुक बना के दे दूं, जैसे इंस्टीट्यूट की बुक हम क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, और हमारी जो खुद की बनाई हुई बुक होती है ऐसे ऐसे, जिसको हमने टैबुलर में कर दिया, उसमें हेडिंग है, उसमें कंटेंट है, दैट इज ईजी टू रीड. क्यों होता है ऐसा? बिकॉज वहां पे इतना लंबा कंटेंट है, देख के ही चक्कर आ जाते, नींद आ जाती है कि यार रात सो जाते, कल से करेंगे, और वो कल 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 होता जाता है. वाई? बिकॉज दे आर लॉन्ग पैराग्राफ. सो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट द एग्जामिनर टू बी एक्स्ट्रा स्मार्ट कि हाँ लॉन्ग पैराग्राफ्स एग्जामिनर को बड़े पसंद आ रहे, किसी को नहीं पसंद आते हैं. अगर आप उनके लिए सिंप्लीफाई करके दोगे ना, वो भी आपको मार्क्स अच्छे से अवॉइड करेंगे, राइट. नाउ ये पॉइंट बड़ा रेलिवेंट है, बिकॉज सबकॉन्शियसली वी हैव दिस टेंडेंसी ऑफ राइटिंग. ये यू आर क्या होता है? हम योर ऐसे नहीं लिख सकते क्या? आदत हो गई है हमारी ऐसे लिखने की. सो वी हैव डेवलप्ड आवर ओन एब्रिविएशंस, आवर ओन शॉर्ट फॉर्म्स, और हम अनकॉन्शियसली वही लिख देते हैं हमारे आंसर में. वो काम नहीं करना है. बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैम आई डोंट हैव अ गुड हैंड राइटिंग. वेल, यू डोंट नीड वन. All you need is a clean handwriting, clear handwriting. मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि एन लिखा है, एस लिखा है, क्या लिखा है समझ ही नहीं आ रहा. पर you don't need a very beautiful handwriting, right? You don't get marks for your handwriting, you just get marks for your crisp provisions. So ensure that you write crisp provisions, and what you have to also ensure is the neat presentation. ठीक है, ओके, चलो भाई. पहला क्वेश्चन आज का जो हम डिस्कस करने वाले हैं, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. आई होप एवरीवन इज रेडी विद अ पेपर एंड अ पेन और अ कॉपी, वॉट एवर इट इज. और क्या है भाई इसका आंसर? ABC Private Limited is a company. Okay, ABC Private Limited is a company in which there are 8 shareholders. Can a member holding less than 1/10 of share capital of the company apply to the tribunal for relief against oppression and mismanagement? पहला चीज तो हमारी सॉर्ट हो गई. वी हैव गॉट दिस आइडिया दैट ओके फाइन, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन रिलेट्स टू द चैप्टर ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट. नहीं तो बच्चों को आधा कंफ्यूजन यहीं पे हो जाता है, मैम कहाँ से पूछा है. Give your answer according to the provisions of Companies Act. This is the first part. Does the scheme of compromise or arrangement require approval of preference shareholder? तो मतलब ये ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट है, दूसरा कॉम्प्रोमाइज एंड अरेंजमेंट है. और अगर मैं बोलूं तो ये क्वेश्चन आइडियली 4+3 7 मार्क्स का एग्जाम में पूछा हुआ है. दैट मीन्स 4 मार्क्स टू दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड 3 मार्क्स टू दिस पर्टिकुलर पार्ट. अब सवाल उठता है कि मैम इसको लिखना कैसे है. चलो भाई शुरू करते हैं हमारी आंसर राइटिंग. लव योर रिविजन क्लासेस, थैंक यू सो मच. आई होप यू आर लविंग द राइटिंग सेशन ऑल्सो. भाई सबको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइटिंग सेशन शुरू हो गया है हमारा और हम लिखने वाले हैं पहला आंसर. आई एम गोइंग टू राइट विद यू. ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऐसा मत सोचना कि मैम बड़ा टाइम लग रहा है. ऐसे कौन सा घर में जैसे मैं छोड़ दूंगी तो एकदम बैठ के पूरे 24 घंटे पढ़ ही लोगे. 1 घंटे मेरे साथ लिखी तो रहे हो, तो आराम से लिखो. ओके, डोंट मैम जल्दी करो, मैम प्लीज बी क्विक, ये सब मेरे को मत बोलना. ठीक है, आराम से लिखते हैं, अच्छे से लिखते हैं. वी हैव टू लर्न द राइटिंग प्रैक्टिस. ओके, चलो. So this is a case study question. This is not a direct question. ये हमारा case based question है. Case based question you all know. अब मैं बच्चों की तरह आपको फाउंडेशन और इंटर लेवल के आप तो बच्चे होने कि मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगी. You are well matured enough.
So how do we start this particular answer, ma'am? As of that matter, how do we start any case study? Usually जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं case study हमारी 4 paragraphs में divided होनी चाहिए, right? It should be divided into 4 paragraphs. What are the 4 paragraphs? How it should be divided? The first thing that we say is provision. The second thing we say is given facts. Third is analysis. And the last one is conclusion. Right? However, एक बात मैं आपको बता दूं, आपको इस पे मार्क्स कभी नहीं मिलते हैं. You only get marks for the provision and the conclusion. But of course, आप straight away ऐसे तो नहीं लिख दोगे ना, तो कुछ तो आपको connect करना पड़ेगा ना. तो कनेक्ट करने के लिए ये चाहिए होता है, इस पे प्लीज बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना. योर मेन फोकस शुड बी ऑन द प्रोविजन एंड द कंक्लूजन. प्रथम विल हैव सेपरेट सेशन फॉर इंटर ऑल्सो. ओके, सो सी यू देयर. नाउ देयर आर 2 types of students. Student who know the section number and 99% students who don't remember the section number. तो वो जो 1% students है वो आराम से लिख सकते हैं. क्या लिखेंगे वो? According to. I'm writing the answer. I will write the entire answer. You have to write that entire answer with me. If you know the answer very well, please try to write pre-hand. And if you find anything that you can rectify or simplify according to my answer, this is not the suggested answer that I'm writing over here. ठीक है, ये मैं अपना आंसर लिख रही हूँ. ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें इनपुट ऐड हो रहा है, देन प्लीज डू दैट. इफ यू डू नॉट नो द आंसर, जस्ट राइट विद मी. सिर्फ मेरे साथ लिखो, इट विल बी हेल्पफुल. एंड वंस वी राइट द आंसर, आई विल गिव यू एडिशनल टिप्स, ओके, of starting the answer, of concluding the answer and everything. Okay, so if you know the section number, great. Even if you do not know the section number, no problem. उसका भी मैं बताऊंगी तरीका. फिलहाल हम एक आइडियल आंसर लिख रहे हैं. ओके, so according to section 244 of Companies Act 2013, following members shall have the right to apply to, यहां पे आप NCLT लिखा है मैंने. You can write tribunal also. Okay? Under. अब under section जब हम लिखते हैं, we can write it like this. U/S. This is under section, very well valid. Okay. Under section 241. अब हमने बोला है following members. So we will change our line and we will write in points that which members which members meet the eligibility criteria to apply. अब यहाँ पे 2 केसेस है हमारे पास. आप ऐसे एरो डाल सकते हो. यूजुअली मैं अवॉइड करती हूं कि ये मत लिखना. ये क्यों मत लिखना? द रीजन बीइंग, जब हम क्वेश्चन देखते हैं ना, तो क्वेश्चन में 1 और 2 ये हमको दिया हुआ है. तो अगर हम अपने आंसर्स में ये वाले पॉइंट्स इनकॉर्पोरेट करेंगे 1 और 2, इट विल ऐड टू कंफ्यूजन. ये 1 और 2 हम लिखेंगे, वी विल राइट दिस 1 और 2, बट वाइल वी आर कंक्लूडिंग आवर आंसर हियर, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ वेयर वी आर राइटिंग द प्रोविजन व्हिच रिलेट्स टू द क्वेश्चन. ओके, सो आप एक एरो डाल सकते हो, आप ए बी लिख सकते हो. इफ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन 1 2, इफ इन द क्वेश्चन इट इज गिवन ए बी, प्लीज डोंट राइट ए बी, राइट 1 2, वॉट एवर पॉइंट्स आपको जैसे भी पॉइंटर्स देने हैं. ठीक है, नाउ वी हैव 2 केसेस. इन केस of company with share capital, please do not write SC. Although आप शायद क्लासेस में ऐसे लिख लेते होगे, बट शेयर कैपिटल मतलब पूरा का पूरा शेयर कैपिटल लिखोगे. अब देखो मैंने क्या किया. इन केस ऑफ कंपनी विद शेयर कैपिटल डैश, अगेन लोअर ऑफ 100 members oblique 1/10 of total members. और सी हाउ आई एम राइटिंग, बड़ा बड़ा बीच में और लिखा है मैंने. यहां पे भी आप एक ऐसे डॉट डाल सकते हो. ये ऐसी चीजें हैं जो बड़ी इजीली जल्दी से हो जाती है एंड इट
classifies your answer well, right? Members holding at least 1/10 of issued share capital. तो यहाँ पे ये चीज बड़ी अच्छे से समझ में आ गई कि अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो इन दोनों में से कोई भी आप एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट कर रहे हो, देन यू आर एबल टू और यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, मेक एन एप्लीकेशन, राइट? नाउ वी हैव अनदर केस. व्हाट इज द सेकंड केस? इन केस ऑफ कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल. आई होप एवरीवन इज राइटिंग विद मी. एक थम्स अप चलो चैट में लिखते जाओ. Without share capital. Anyone and everyone who is writing, please, I want a thumbs up in the chat. At least 1/5 of total number of shares. Okay. ये हमने क्या लिखा है? ये हमने पूरा का पूरा प्रोविजन लिखा है, राइट? Now, अब हम किस पे आ रहे हैं? We are coming to the next part, that is the conclusion. Conclusion and analysis can be clubbed together, or you can write analysis separately and thereafter conclusion. आप ऐसे भी लिख सकते हो, but that depends. सिर्फ दो ही बच्चे लिख रहे हैं, मुझे लग रहा है. पूजा एंड वानी, they are the only two students who are writing answers with me. The other students, what are you doing? Watching me? चलो मिस्टर कन्नन, एक और आया. The given company. What are we starting with? We are starting with that analysis part and thereafter we will incorporate conclusion also. So the given company in question is a company with share capital. तो यहां से एग्जामिनर को हमने पहली क्लैरिटी क्या दी? That you fall under the first category. Right? Change the line. डोंट बी अफ्रेड टू चेंज लाइन्स कि मैम हम क्या कर रहे हैं, हम एक पैराग्राफ में ये भी नहीं लिखेंगे कि आप आराम से लाइन्स चेंज करो, ठीक है? ऐसा कोई नहीं बोलेगा इस पैराग्राफ में नहीं लिखा तो नंबर काट लेंगे, बट एक पैराग्राफ में अगर 4 लाइन्स लिखेंगे एंड द एग्जामिनर डजंट गेट इट तो नंबर जरूर कट जाएंगे. नाउ देयर आर 8 शेयर होल्डर्स. ओके फाइन, गुड टू सी दैट एवरीवन इज राइटिंग. देयर आर 8 शेयर होल्डर्स. ओके, 1/10 of 8 is 1 member. ये हमने क्या किया है? एनालिसिस किया है. दैट वी नीड 1/10 of the total members. There are 8 shareholders, that means 8 members. So 1/10 of 8 comes out to be 1 member. Now ये हमारा कंक्लूजन शुरू हुआ. Since even a single member meets the eligibility criteria mentioned above, he can present a petition to the tribunal. हमसे पूछा क्या गया था? Can a single member present a petition to the tribunal? So we have concluded over here that he can present. अब करना क्या है? No scale, no pencil, no changing of pens, nothing. You don't have that much time in your professional exams. ठीक है? लॉ का इतना huge paper आपको लिखना है. You don't have that much time. What you can simply do is underline this with the same pen and मैम मेरे से सीधी लाइन नहीं खींचती, अब ये सीधी टेढ़ी ये सब थोड़ा सा मैनेज कर लेना, हल्का सा बस ऐसे अंडरलाइन कर देना सो दैट एग्जामिनर को अट्रैक्ट हो जाए दैट ओके फाइन ही कैन प्रेजेंट, दैट इज योर कंक्लूजन एंड इफ यू हैव 1 मार्क्स फॉर द कंक्लूजन यू विल बी रिवॉर्डेड स्ट्रेट अवे. ओके चलो इसके आगे मैम और कुछ भी लिखना है क्या? एक लाइन हम थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं. रीजन बीइंग यहाँ पे एक सेकंड रिक्वायरमेंट भी रहता है, ऑल्दो इसके बारे में कुछ हमको दिया हुआ नहीं है बट स्टिल वी कैन इनकॉर्पोरेट इट. व्हाट इज इट? regardless of the fact whether
he holds 1/10 of company's share capital or not, as only, or you can write rather, any one criteria needs to be met. Okay, so I hope this gives you clarity. इतना लिखना पड़ेगा आपको 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए. मैम अगर ये क्वेश्चन, what if this particular question was asked for 3 marks only, तो भी आप इतना लिखते. Okay, even if this question was asked for 3 marks, then also you would have written the same thing. Even if this question was asked for 5 marks, then also you would have written the same thing. मतलब हम कितने भी नंबर का है हम लिखेंगे इतना ही. Roughly 3, 4, 5 में हम इतना ही लिखेंगे. Okay. Depending upon the content, what institute or how we design papers is like कि इसमें कंटेंट ज्यादा है, आपको दे दिया 4 नंबर का. इसमें कंटेंट बहुत कम है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा था फिर भी और गेटिंग 4 मार्क्स ओनली. इसमें बहुत कम है फिर भी और गेटिंग मे बी 3 मार्क्स. तो वो अकॉर्डिंगली बैलेंस कर देते हैं अबाउट वॉट यू राइट एंड हाउ यू आर गेटिंग रिवॉर्डेड. ओके, सो डोंट थिंक दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वेरी लेंथी. देयर इज अ शॉर्ट क्वेश्चन ऑल्सो, माय डियर. फाइन. तो दिस वॉज आवर फर्स्ट पार्ट दैट वी हैव कंप्लीटेड. Easy question, but this is how you are going to present. Ab, before we move to the next part or to the second part of the same question which carries 3 marks, I want you to note certain things. क्या भाई लिखेंगे हम? कुछ लिखेंगे. क्या लिखेंगे? Opening. How to start an answer. What are we writing? How to start an answer. इफ यू वॉन्ट टू इम्प्रेस समवन, आप ओपनिंग लाइन्स अलग अलग पिक करते हो कि नहीं करते हो? राइट, एक ही चीज बोलते रहते हैं हर समय. इमेजिन इफ आई कम एंड कीप ऑन सेइंग द सेम थिंग टू यू. आप 2 दिन सुनोगे, तीसरे दिन आप बोर हो जाओगे. सो एग्जामिनर ऑल्सो गेट्स बोर्ड if you write your answer the same manner, all your answers according to companies act, according to companies act, according to companies act. वो चौथा आंसर पढ़ेगा भी नहीं, भूलेगा यही लिखा होगा अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, बिकॉज द चाइल्ड डजंट रियली नो हाउ टू प्रेजेंट द आंसर्स, राइट? सो व्हाट यू कैन डू इज, you may be knowing the section number, you might not be knowing the section number. So in case you don't know the section numbers, मैं वो केस भी बता रही हूँ. no section number. How many of you remembered the section number of this particular question? चलो चैट बॉक्स में बताओ मुझे, how many of you knew कि हाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कौन सा रेलिवेंट सेक्शन नंबर लग रहा है? यस, नो, बस दैट्स इट, दैट्स ऑल यू हैव टू राइट. यस, नो. द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ Companies Act states that according to, here I am using short forms, you don't have to use that. ये मैं सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए बता रही हूँ. Okay, I'm just telling you what are the different ways how you can start your answer even if you do not know the section numbers. चलो, according to provisions of Companies Act. See, what I'm seeing is most of you do not know the section numbers. Never mind. In accordance with law made in this regard. तो बहुत सारे तरीके हैं. इवन इफ यू डू नॉट नो द सेक्शन नंबर्स, इफ यू नो द सेक्शन नंबर्स भाई तब तो क्या बात है. इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन, द गिवन प्रॉब्लम रिलेट्स टू section this of Banking Regulation Act, section this of Competition Act, whatever it is.
right? As per provisions of this particular section, right? Or maybe this particular section provides for appointment of this, ऐसे हम बोलते हैं ना. So we have ample of ways how we can start our answer. So even in this question, obviously we have started with the basic version according to section 244 of Companies Act. If you do not know this, you may use in accordance with the law made in this regard under Companies Act, following members shall have to enhance होता है आपका थोड़ा आंसर. It pleases the eyes of examiner, right? चलो, moving to the next part. Our first question is not yet over, my dear. We have the second part. Does the scheme of compromise or arrangement require approval of preference shareholder? Many students might not even be knowing this particular answer, but it is a very simple answer. And although it carries 3 marks, it does not have much content to write. ठीक है, तो ये जो हमारा है, ये छोटा सा आंसर है जो हमें लिखना है. आई एम राइटिंग एंड आई वॉन्ट everyone to write with me. This is part B that we are writing. वो part 1 था. There are 2 types of shares in a company, and the term member includes preference shareholders also. Whenever we say members, it includes preference shareholders also. Although they don't have decision making powers in every agenda. We know that, right? इनके पास voting rights थोड़ी ना होती हैं. They are a class of members and entitled to voting if their rights may be affected. ये हमने पहली चीज लिखी. और वी कैन ऑल्सो राइट एज सजेस्टेड इन द प्रपोज्ड स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट. अच्छा, ऐसे मैं लिख दूंगी, आप भी लिख दोगे. कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट. तो जब भी whenever we are going for a compromise or arrangement, the rights may also be affected. Hence their approval is also required. अब हमको क्या करना है? This is something which we will underline. Hence their approval is also required. Apart from this, क्या मैम हमको कुछ और भी अंडरलाइन करना चाहिए? सी, ऑल्दो मैंने जब ऊपर वाला आंसर लिखा, मैंने इसको बहुत अलग अलग पॉइंट्स में लिखा है एंड ये क्लियरली अलग अलग तरीके से विजिबल है. बट सपोजली यू आर राइटिंग दिस इन अ पैराग्राफ, या फिर यू आर नॉट यूजिंग सच टाइप ऑफ लैंग्वेज, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन वी गो नॉट लेस दैन 1/10, इस तरीके से हम लैंग्वेज यूज करते हैं. सो इफ यू आर यूजिंग दैट एग्जैक्ट लॉ लैंग्वेज एंड इट्स अ ह्यूज पैराग्राफ, तो वहां पे आप ऐसे लिमिट्स को जरूर अंडरलाइन करिए. ओके, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इफ योर हैंड राइटिंग इज नॉट दैट क्लियर, अगर आपकी राइटिंग कहीं ना कहीं हेजी सी है, देन ऑल्सो यू मस्ट ट्राई टू अंडरलाइन द सेम. ओके, तो हेंस देयर अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. मैम दैट्स इट? नो, थोड़ा सा और हम प्रोविजन से रिलेटेड लिखेंगे. इफ कोर्ट / NCLT
directs separate meeting ऑफ प्रेफरेंस. मैम क्या हम लोग PSH लिख सकते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को? द आंसर इज नो. NCLT you can use, AGM you can use, EGM you can use. तो इस तरह ROC also you can use. तो हमारे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स आप यूज कर सकते हो एंड देयर आर सम शॉर्ट फॉर्म्स विच यू कैन नॉट यूज. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड equity shareholders. See, if they are going to have a separate meeting, then scheme should be approved. Should be approved by requisite majority in both such meetings held as per directions of NCLT. In fact, you can strike off quote over here. आप सिर्फ NCLT लिखोगे तो provision is well off. Okay. So with this, we mark the end of very first question. सी पूजा, इट इज नॉट दैट कि आप सेक्शन नंबर लिख दोगे तो सेक्शन नंबर पे आपको 1 मार्क मिल जाएगा. नो, यू डोंट गेट स्ट्रेट अवे 1 मार्क फॉर राइटिंग जस्ट सेक्शन नंबर्स. Every examiner has its own discretion because this is not simple mathematics or cost accounting that you get a particular answer, you have written the steps and you get full marks. No, it is a paper of judgment. Right. So what we do is we read your answer. We try to understand how much concept do you know, how much you have been able to present, and accordingly you're being rewarded answer. When you write section number, it enhances your answer and it gives an idea. No, this particular child knows the provision. So even if you have written something maybe offbeat or maybe you have not been able to clearly communicate, still you have bright chances of scoring high marks when you get a section number. But when we talk about step marking, definitely you don't have any marks specially awarded to the section number or any marks which is specially deducted if you don't write the section number. ठीक है. So section number does not play any role in answers directly, but it plays a major indirect role. समझ में आ गई बात? चल. Okay, moving to the next question. Question number 2. Question number 2 मैं पढ़ूंगी and there are 2 sections which are applicable to this particular question and I want everyone to please write those 2 sections. आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन हिट कर रहा है या ये क्वेश्चन एप्लीकेबल है. So those 2 questions we will pick up. We will write the provision relating to those 2 sections and thereafter हम क्या करेंगे, इन दोनों का कंक्लूजन करेंगे. मैम, आई एम योर इंटर स्टूडेंट. आई गॉट एन एग्जाम्शन इन लॉ. थैंक्स अ लॉट फॉर योर गाइडेंस. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट श्वेता. मैम, इज सेक्शन नंबर मैंडेटरी? आई टोल्ड यू सांकृश. आई होप द डाउट शुड बी क्लियर अबाउट सेक्शन नंबर सो फार. है ना? सेक्शन नंबर वाली बात सबको समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? एक्चुअली थोड़ा सा वो होता है तो मेरे को समझ नहीं आता है. कम ऑन एवरीवन, प्लीज एक बार मेरे को क्लैरिटी दो. यू ऑल हैव अंडरस्टूड कि सेक्शन नंबर की क्या इंपॉर्टेंस या क्या रेलेवेंस है. हाँ या ना? अरे सो गए हो क्या यार सारे? कम ऑन एवरीवन, कुछ तो रिप्लाई करो तो मैं आगे बढ़ू. इतना तो लैग नहीं हो सकता. Yes, ma'am. Thank you. Chalo, yes. Finally, I'm getting inputs. Yes, yes, yes. Okay, great. Fine. So now I'm reading question number 2 and what you have to do is you have to tell me the section numbers. 2 sections इसमें applicable है. मैंने आपको already बता दिया है. The board of directors of XYZ Company Limited at its meeting declared a dividend on its paid up equity share capital. Fine.
तो बोर्ड ने डिक्लेयर किया, which was later on approved at company's annual general meeting. They should have actually written the board proposed, because declaring word is not used over here, but ठीक है, हमको समझ में आ गया intention. In the meantime, the directors at another meeting of the board decided by passing a resolution to divert the total dividend to be paid to shareholders for purchase of investment. So they decided that, okay, fine, we will divert whatever money we have accumulated for payment of dividend, we'll divert this towards the investments. So as a result, dividend was paid to shareholders after 45 days. Examining the provisions of Companies Act state, दो चीजें हमसे पूछी गई है, whether the act of directors is in violation of provisions of Companies Act and also the consequences जो follow करेंगे, and would your answer be different in case the amount of dividend is adjusted by the company against certain dues from the shareholder. So we have been given two cases. Again, it's a beautiful case study from the chapter of dividend. किसी ने भी मुझे अभी तक सेक्शन नंबर नहीं बताया, कहाँ हो यार? Wake up everyone, there are two sections which are involved, आपको पता होना चाहिए. किसी बच्चे को सेक्शन नंबर नहीं याद है? ऐसे दिल मत तोड़ो मेरा. There are two sections involved. एक कोई तो इनपुट दे दो यार. नहीं तो मैं अब फिर मेरे को क्या है, आई हैव टू स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर सेक्शन नंबर ओनली. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दैट. एक आंसर आया बट इट्स नॉट एग्जैक्टली करेक्ट, बट हाँ ठीक है. Section 123 does not really play a role in this particular question. We have no 125 तो एकदम ही नहीं, 123 तो चलो फिर भी डिविडेंड से रिलेटेड है, इसलिए नहीं 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 बच्चों, नहीं नहीं नहीं. Section 127, thank you so much कान्हा नायक. Section 124 राघवेंद्र दुबे. 125 कहाँ चले जा रहे हो? 125 IEPF का सेक्शन है, कहाँ हो यार? कम बैक. इतना नहीं जाना है आगे. 127 आशुतोष मिश्रा, ग्रेट. तो हमारे दो रेलेवेंट सेक्शंस हैं, एक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करने की बात, एंड सेकेंडली द कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन पेमेंट व्हिच इज गिवन इन सेक्शन 127, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो हमें क्या लिखना है? हमें दो चीजें लिखनी है. वी हैव टू राइट टू प्रोविजंस. व्हाट टू प्रोविजंस? इन अकॉर्डेंस. Now you can simply write in your own words. You should try to recall and collect and write. In accordance with section 124 of Companies Act 2013, where dividend has been declared by company but not paid within 30 days from date of declaration, the company shall transfer such unpaid amount within 7 days of expiry of such period to a special account opened with scheduled bank and called as unpaid dividend account. Okay, तो ये हमारे क्या आई? फर्स्ट पोर्शन आया which we have to write, right? ये हमारा फर्स्ट पोर्शन आया, बहुत शॉर्ट में हमने लिखा है. I think it hardly takes 1 minute in writing this, right?
Now comes our second and the most important part of this particular question, which is about section number 127. So now what we are going to write is, according to section 127 of Companies Act 2013, where dividend has been declared by a company but has not been paid within 30 days from the date of declaration to entitled shareholder, then following penal consequences shall be attracted. क्या penal consequences हमारे attract होंगे? और आई वुड रादर से ऐसे आप मत लिखो, ठीक है? यहां पे लेट्स एनहांस आवर आंसर इवन बेटर. ओके, आई थिंक यू नो द पेनाल्टी, सो ग्रेट. हम यहां पे क्या लिख रहे हैं? इफ इट इज नॉट पेड, एवरी डायरेक्टर of company who is knowingly a party to default is liable to punishment under this section. How many of you remember the exceptions? If I say, however, no penal consequences shall be attracted in following cases. क्या आप मुझे यहाँ पे केसेस बता सकते हो? इन विच केसेस penal consequences shall not be attracted? See, for the students who are not writing answers with me, पहला आंसर शायद आप लोगों ने मन लगा के लिखा होगा, दूसरे आंसर्स में से लगा होगा अरे यार ठीक है यही तो है. They are the ones who will face difficulty when they write their answers in examination. Because अभी अगर आपके राइटिंग प्रैक्टिस ने एक आंसर लिख के अरे यार ठीक है यही तो लिखना है तो we will write, तो ऐसे नहीं लिखाता है. You have to practice. I'm writing the exceptions. Please try to write the exceptions on your own. In case you do not know that, then you can refer. Dividend could not be paid by operation of law. Direction of shareholder could not be complied with. Very good. There is dispute regarding right to receive dividend. मैम क्या हमको ये इनकॉर्पोरेट करना चाहिए हमारे आंसर में? द आंसर इज येस. आई एम नॉट राइटिंग द फुल सेंटेंसेस, मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिख रही हूँ ऑल दीज एक्सेप्शंस. सो इन शॉर्ट यू हैव टू राइट द एक्सेप्शंस बिकॉज जो हमारा नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है दैट्स अबाउट द एक्सेप्शन ओनली, राइट? डिविडेंड इज lawfully adjusted by company
against any sum due to it from shareholder. And lastly, failure is not on default, or failure is not by default of company. So we have these 5 exceptions. Ma'am, इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद what you have to do is, now we come to point number 1 and now we come to point number 2. So we have written the entire provision and now it's the time to conclude. It was a long question. We have written the entire provision beautifully and incorporated every single thing. अब हमको क्या हमारा प्रोविजन पूरा हो गया है? द आंसर इज नो. बट जो हमें फर्स्ट पार्ट पूछा गया है जहां पे हमको कंक्लूजन लिखना है, नाउ हियर वी हैव टू राइट मैक्सिमम imprisonment. Okay, let me write it properly only, otherwise you will also copy the same way. Every director of the company shall be punishable with. अब मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से I'm writing the penalty, and you can write this way in your examination and don't worry, you'll get absolute full marks. Maximum imprisonment 2 years. And this is very important, you write it in caps, and fine 1,000 per day during which such default continues. The company shall, in the next line, okay, the company shall also be liable to pay simple interest at the rate of 18% per annum during the period for which such default continues. तो ये फाइनली हमारा फर्स्ट पार्ट कंक्लूड हुआ. ओनली द फर्स्ट पार्ट. नाउ द सेकेंड पार्ट, उसके एक्सेप्शंस हमने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, सो वी डोंट फेस एनी प्रॉब्लम. व्हाट वी हैव टू डू इज, इफ द अमाउंट ऑफ डिविडेंड is adjusted against dues of shareholder, then failure to pay such dividend does not amount to contravention under section 127, and hence no penalty to be attracted. Okay, मैं थोड़ा जल्दी लिख रही हूँ, तो राइटिंग मेरी बहुत ही गंदी सी बन रही है, बट एज आई टोल्ड यू, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज द नीट प्रेजेंटेशन. यू हैव टू मेंटेन द स्पीड राइट फ्रॉम स्टार्ट. आपको अपनी स्पीड में कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है. प्लीज डोंट थिंक कि हम बहुत सजा के लिखेंगे, ऐसे क्या होगा, आपके 4 क्वेश्चन छूट जाएंगे. सो मेंटेन स्पीड राइट फ्रॉम स्टार्ट. ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. I hope this doesn't disturb you. अगर आप लोगों को साउंड में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लगे, सो प्लीज चैट में मेरे को बताना जरूर. वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. नाउ वी हैव अ ब्यूटिफुल क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. 2022 सिलेबस के जो स्टूडेंट्स हैं
वो अगर अपने मॉड्यूल को उठा के देखेंगे तो दे माइट थिंक दैट मैम सेक्शन नंबर 35 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इज नॉट इन आवर सिलेबस. आइडियली इट इज देयर बट इट हैज नॉट बीन रिटन सो. 2016 syllabus students will definitely find this particular section in their material, which is just 2 lines. ठीक है, आपको सिर्फ 2 लाइन लिखी हुई है कि हाँ, रिजर्व बैंक हैज द पावर ऑफ इंस्पेक्शन, विच आई हैव टॉट टू माय 2022 सिलेबस स्टूडेंट्स ऑल्सो, कि आपको पता होना चाहिए आरबीआई हैज द पावर ऑफ इंस्पेक्शन. सो ऑल दोस हु डू नॉट नो दिस, दे ऑल्सो शुड नो दिस. ठीक है, तो हो सकता है आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, बट इफ यू ट्राई टू रिकलेक्ट द प्रोविजंस, यू विल अंडरस्टैंड. सो वी हैव 3 थिंग्स which you must write in this particular question to make your answer worthy. क्या है मैम? Various complaints have been made against the activities of a cooperative banking company to the effect that, if unchecked, the shareholders, depositors, and others will suffer heavily, and the complainants requested for the appointment of directors by RBI. ठीक है. Discuss whether RBI has any powers to inspect the records to ascertain the truth in the complaints and to appoint directors. तो आइडियली हमसे 2 चीजें पूछी गई है. क्या आरबीआई के पास पावर है ऑफ इंस्पेक्शन? क्या आरबीआई के पास पावर है ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स? सो वी हैव टू सेक्शंस 35 एंड 36 ए बी रेलिवेंट. हमने एक और सेक्शन यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू मैम, सब सेक्शन भी याद रखना है. सब सेक्शंस आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट हाँ, एक आधी जगह इंपॉर्टेंट होता है, विच प्रोबेबली जहां से भी आपने थोड़ी गाइडेंस ऑब्टेन की है, आपको बताया गया होगा. ऐसे मैं अपने क्लास में बताती हूं कि यहां पे सब सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. RBI has, now see here we are not starting the answer in accordance with section number. नहीं, हम कैसे स्टार्ट कर रहे हैं? RBI has, because there are 3 sections which I will incorporate. So RBI has following powers under Banking Regulation Act, under Banking Regulation Act, with respect to the complaints stated in the question. Stated in the question. Okay, so we are going to write 3 points. हम 3 points लिखने वाले हैं. Now we start with the section number. In accordance with section 35 of Banking Regulation Act 1949, with a view to safeguard the interest of shareholders and depositors of banking companies RBI is entrusted with wide powers to cause an inspection of any banking company and its books of accounts. तो यहाँ पे पहली चीज हमने क्या बताई कि येस दे हैव द पावर ऑफ इंस्पेक्शन. दूसरी चीज हम क्या बता रहे हैं? अंडर section 35A, RBI may, to secure
proper management, proper management of any banking company, of any banking company from time to time issue such directions as it deems fit, and the banking company shall be bound to comply with such directions. ठीक है, सो ये एक जनरल पॉइंट है जो हमने इनकॉर्पोरेट किया है, दैट आरबीआई ऑल्सो हैज द पावर टू इशू डायरेक्शंस. पहली चीज, द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इनकॉर्पोरेटेड, आरबीआई हैज द पावर ऑफ इंस्पेक्शन. द सेकंड थिंग, आरबीआई ऑल्सो हैज द पावर टू इशू डायरेक्शंस. एंड द थर्ड थिंग इज आरबीआई हैज द पावर टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर्स, जो हमसे स्ट्रेट अवे क्वेश्चन में पूछा हुआ है. दैट पर्टिकुलर पोर्शन इज कवर्ड इन Furthermore, RBI under section 36AB is empowered. RBI के पास पावर है. RBI is empowered to appoint additional directors. RBI is empowered to appoint additional directors in the interest of bank or that of depositors, okay. Such directors or the directors so appointed shall hold office for period of 3 years. मैंने इन जनरल लिखा है. ऑफ कोर्स देयर इज अ टेक्निकल लैंग्वेज अटैच्ड टू इट. फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years, बट फाइन, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years इज द जनरल थिंग दैट वी ऑल नो. और ये 3 चीजें हमने लिखी हैं. दिस वॉज मोर और लेस अ डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट? दिस वॉज मोर और लेस अ डायरेक्ट क्वेश्चन. एंड हमारे पास एक और ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन है. इफ यू लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज द manner of initiation of CIRP by financial creditor. ये क्वेश्चन मैं आपको करा नहीं रही हूं. ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू मेक यू राइट द एंटायर थिंग, बट दिस इज योर होमवर्क. आज आपका कुछ तो टेक अवे होना चाहिए ना, कि आज का मैम ने क्लास दिया है तो कुछ तो होमवर्क होना चाहिए हमारे पास. सो व्हाट यू विल राइट एंड हाउ यू विल राइट, आई एम गाइडिंग. It is only for the students who actually want to enhance and improve their writing skills. The first step that you will write is filing of application. The second step, manner of making application in such form and manner as prescribed. Attachment to application will be a third step. Then admission or rejection of application will be a fourth step. And the last step will be commencement of CIRP. तो उसके बारे में आपको लिखना होगा. तो ये 5 स्टेप्स में आपको ये डायरेक्ट आंसर लिखना होगा. दैट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 4. ओके, नाउ आई हैव सर्टेन मोर थिंग्स टू टेल यू अबाउट राइटिंग स्किल्स. हाँ, सेक्शन 7 ऑफ IBC, फाइन, ग्रेट. एक बात आती है बच्चों के मन में, दैट मैम हाउ डू वी कंक्लूड आवर आंसर. जस्ट लाइक आई हैव गिवन यू द ओपनिंग लाइन्स, वी ऑल्सो हैव अ लॉट ऑफ कंक्लूडिंग लाइन्स. You can write, in view of above provisions, the contention of Mr. X is correct or Mr. X is tenable. Hence, the company may proceed for allotment. है ना? तो आप इस तरीके से अलग अलग तरीके से you can go for conclusion. अच्छा, अब एक चीज और, many students have the habit of writing answers like this. ये प्रोविजन ऐसे लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे ऐसे एनालिसिस, उसके बाद हम ऐसे लिखेंगे कंक्लूजन. मैम, शुड वी राइट लाइक दिस? द आंसर इज नो. वेल, आई कैन नॉट से कि ऐसे लिखोगे तो नंबर कट जाएगा, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल. यू आर राइटिंग प्रोफेशनल आंसर्स, यू डोंट नीड टू गिव
कि ये प्रोविजन है, ये एनालिसिस है, नो, ऐसे आप नहीं लिखोगे, ठीक है. You divide it into short paragraphs, different paragraphs. Please give one space line between the provision and the analysis. उसके बाद conclusion analysis अगर आपका separate है, because बहुत बड़ा है, तो आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा. In that case also you should leave one line and thereafter write it. But please don't give such type of headings. Okay. शॉर्ट फॉर्म्स एजीएम, ईजीएम, एनसीएलटी, आरओसी, इस तरीके के आप यूज कर सकते हो. दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, right? Can you write penalties in numbers? The answer is yes. If the penalty is 50,000, you don't need to write FIFTY 50,000. No, you can straight away write 50,000. There's no problem at all. Okay, so I think I have given you a lot of clarity about this writing practice. उसके बाद भी अगर आपके कुछ doubts हो, you can definitely drop in the comments and we'll look at those doubts and we'll try to address the best possible manner. आज हमने कुछ questions practice किए हैं. Of course, we have time constraint and I cannot sit over here the whole day and write answers. I don't know how many of you are writing answers because मेरे लिखने से कुछ फायदा होगा नहीं. So ultimately, if you write, then only you will get benefit from it, right? So मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको benefit जरूर मिला है तो मुझे comments के through बताना जरूर. We wrap up our session of writing practice here itself and wish you all the very best. Stay subscribed to the channel. जिसने भी like नहीं किया वीडियो को प्लीज like करके जाना. Share with your friends, juniors, seniors, whoever needs it, right? And please stay subscribed to the channel because we have more sessions coming up. ठीक है, चलो. All the very best to all of you. Hope you enjoyed the session. Please comments के through मेरे को बताना. Okay, चलो. Thank you everyone for being such lovely students. Amendments have already been pushed, Ramesh. मैंने amendments का video already, we have uploaded it, right? We have already uploaded the amendments video, so you can check it there. Okay? Thank you.